रेडी? हेल्थ मिनिस्टर, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर, ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, यूनियन लेबर मिनिस्टर, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, यूनियन लॉ मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर। मिनिस्टर के लिए क्या करेंगे? एसटीआर का बड़ा लूप लगा देंगे। एक ही पैटर्न फॉलो करना है बस उसी को। हेल्थ बनाते हो टिक एच एल और फिर एच, उसमें बड़ा लूप लगा दो। क्या पढ़ेंगे इसको? हेल्थ मिनिस्टर। आप लिखते हो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, ऑनरेबल का एनआर बनाया और फाइनेंस में मिनिस्टर लगा दिया, एफएम मिनिस्टर लगा दिया बस। आपने लिखना है ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर, ऑनरेबल लॉ के लिए एल लगाएंगे और मिनिस्टर का लूप लगा देंगे, ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर, तो जो एजुकेशन मिनिस्टर बनाते हो उसी में ही क्या करना है? ऑनरेबल लगा देना है, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर। ओनली लॉ मिनिस्टर होता, लॉ मिनिस्टर। या फिर आपने लिखना है चीफ मिनिस्टर, तो चीफ का चीफ डब्ल्यू की और मिनिस्टर लगा दिया, चीफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर, पीआर मिनिस्टर। या कई बार हम एम की डबलिंग भी कर देते हैं, बेटर ये है, एक ही पैटर्न रखो तो ज्यादा अच्छा है। ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर, ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर। यूनियन मिनिस्टर, तो यूनियन कहां बनता है? लाइन को काटते हुए, उसी में मिनिस्टर का लूप लगा दो, यूनियन मिनिस्टर। यूनियन लॉ मिनिस्टर, यूनियन लॉ मिनिस्टर। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, यूनियन लेबर मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर हो गया, हेल्थ मिनिस्टर हो गया, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर। तो आपने मिनिस्टर के लिए लूप लगा लेना है। आप कुछ कॉन्ट्रैक्शन लिखो, फिर एक्सरे लगा रहा हूं, लिखो। पैसेंजर, मैसेंजर, स्ट्रेंजर, डेंजर, डेंजरस, कंटिंजेंसी, इमरजेंसी, एक्जेंसी, स्ट्रिंजेंसी, अपॉइंटमेंट, अटेनमेंट, कंटेनमेंट, असाइनमेंट, इंटरटेनमेंट, इनलाइटनमेंट, अबंडनमेंट, आयरन मोंगर, वन सेल्फ, डिमोन्स्ट्रेट, रिमोन्स्ट्रेट, रिमोस्ट्रेंस, मिनिस्ट्री, मोनेस्ट्रस, मैन्युस्क्रिप्ट, हैंस फॉरवर्ड, देंस फॉरवर्ड, एक्सपेक्ट, एक्सपेक्टेड, इंस्पेक्ट, इंस्पेक्टेड, इंस्पेक्शन, प्रोस्पेक्ट, रेस्पेक्ट, रेस्पेक्टेड, रिट्रोस्पेक्ट, इम्परफेक्ट, इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शनली, सस्पेक्ट, सस्पेक्टेड, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टेड, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्टेड, आर्किटेक्ट, आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चरल, पर्सपेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव, प्रोडक्टिव, ऑब्स्ट्रक्टिव, ऑब्जेक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिवली, रिट्रोस्पेक्टिव, इररेस्पेक्टिव, इररेस्पेक्टिवली, प्रोडक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शनेबल, डिस्ट्रक्शन, ज्यूरिसडिक्शन, इंट्रोडक्शन, रिट्रोस्पेक्शन। इसेंशियल वोवल्स लिखेंगे। इसेंशियल वोवल्स में क्या होता है? पेयर में लिखना है आपको, एक में वोवल कंपलसरी लगेगा और एक में नहीं लगेगा। वोवल उसी में लगाएंगे जो आपका डिफरेंस क्रिएट करना होगा, जहां पे सिर्फ वही वोवल यूज करेंगे। ये जो कॉन्ट्रैक्शन थे, ये चैप्टर नंबर आपके 29 में से थे, आपकी पिटमेन वाली बुक में से दे रखे हैं, आउटलाइन सामने दे रखी है, सभी ने प्रैक्टिस कर रखी होगी इसकी प्रॉपरली। ये वर्ड काफी फ्रिक्वेंटली आते हैं
और इनकी आउटलाइन कोई अलग से बनाने में प्रॉपर आउटलाइन बनती नहीं है अगर आप इनको मेमोराइज नहीं करोगे। ये आपको एक तरह से मगअप करने होते हैं, पर ये ग्राम लोग से आसान होते हैं। इनमें 2 स्टॉक होने की वजह से जल्दी रीड बैक हो जाते हैं। आप इसेंशियल वोवेल्स लिखेंगे पेयर में, चैप्टर नंबर 32 से है, उसी में से। अपोजिट, अपोजिट, एपिथेटिक, पैथेटिक, अप्रोक्सीमेट, प्रोक्सीमेट, एब्सोल्यूट, ऑब्सोल्यूट, ऑडिटर, डॉटर, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्रोस, क्रॉस, afar, far, affect, effect, effaced, faced, emotion, motion, altitude, latitude, adapt, adopt, extricate, extract, commissioner, commissioner, exaltation, exaltation, valuable, valuable, amazing, amusing, innovation, invention, lost, last, layman, layman, sulfite, sulfate, humanly, humanly, chilly, chill, monarchy, monarch, amicably, amicable, monkey, monk, manly, manual, enemy, name, anomaly, animal, snow, sun, liberally, liberal, radically, radical। डिक्टेशन लिखेंगे। Ready? Started. As you have already pointed out, under Article 323 of the Constitution, the Union Public Service Commission submits annual reports, and these reports are laid before both the Houses of Parliament, along with any memorandum, if there be any, from the government, explaining their position as to why they have not accepted the particular advice of the Commission. Sir, we have so far received 3 such reports from the Commission, and I have gone through these reports. Sir, the general impression that I have gathered after going through these 3 reports is that, apart from the fact that there have been cases of non-acceptance of the Commission's advice in many important matters, there are, sir, very serious irregularities committed by the executive government in the matter of appointments to the civil posts and the civil services. If you permit me, sir, I may add that I have found that there are occasions when the government has even bypassed the Houses of Parliament in their anxiety to provide for their favorites. Sir, under Article 320 of the Constitution, as you have already pointed out, the recruitments to civil posts and the civil services are to be made by the Union Public Service Commission. There are 2 basic ideas underlying this system of recruitment to the civil services adopted in our Constitution. Firstly, we desire that all eligible persons to a particular post should be entitled to enter into a fair and free competition to get that job. Secondly, we want to avoid all elements of patronage in the matter of appointments to our civil services. You will find that under the old regulation, which has been kept in force under Article 372, there are several categories
of employment and posts which have been kept away from the purview of the Union Public Service Commission. One of these categories is temporary appointments lasting for less than a year. I maintain from a review of all these reports that the government has abused this power of temporary appointments. The government has used it as a shield to bestow all kinds of patronage. Sir, if you look at the posts, you will find that on the very face of it, they are not temporary posts, but that they are likely to continue for more than a year. Sir, appointments to such posts are made as temporary appointments merely to avoid the Union Public Service Commission. In the name of temporary and emergency appointments, I find that a large number of appointments are being made. The glaring examples are the Community Projects Administration and the All India Radio under the Ministry of Information and Broadcasting. We find, as a matter of fact, such appointments being made by every ministry, but these are the very glaring examples, and I would like the Honorable Minister to tell this House as to how many temporary appointments are being made every year by the government and how many of them are continued even after the end of the year. Sir, they make the temporary appointments and they keep these appointments going on year after year, and they do not also consult the commission, although under the constitution they are recruited to do so. Apart from bringing in an element of patronage in the civil appointments, this procedure acts very unfairly to the other candidates who compete from the open market when these temporary posts are made permanent. When the appointments are regularized by inviting applications by means of advertisements, what happens is this: we cannot prevent these temporary appointees from competing in such examinations, and these temporary appointees who have gained experience at the cost of the taxpayer compete with the candidates from the open market and do better because of the experience that they have gained. I know it from my personal knowledge that appointments in the temporary cadre are purposely made in order that a particular candidate may gain experience and do better at competitive examinations and have a better chance of getting a permanent government service. Otherwise, he could never have got such a post. Sir, not only this, but the Commission have also referred to the fact that advertisements are drafted in such a way that it may suit a particular person. On page 9 of the first report, they say advertisements for posts in the category of technical, scientific or specialized qualifications are often so drafted by ministries as to tend to restrict the recruitment to the limited circle of persons already holding the posts advertised or analogous posts. One of the main functions of the Commission is to so draft the advertisement without sacrificing the requirements of the post as to ensure a
competitive selection for the post from the widest field. I have looked into the regulations and the method by which the Public Service Commission works in UK. There the ministries merely inform the Service Commission that they want such a post to be filled with a person of such and such qualifications. The advertisement is drafted by the Service Commission and not by the ministries as to done here. Here, government are anxious to bestow patronage, and therefore is that they want to avoid going to the Public Service Commission and continue to make these temporary appointments and draft the advertisements themselves. I find from the report that as early as January 2001, the Commission submitted their proposals to the government as to how the existing regulations should be remodeled so that each case should come under the purview of the Union Public Service Commission. Now, the government has not taken any decision in this matter. These proposals ought to have been placed before both houses of Parliament as required under the Constitution, and so that the houses will be fully seized of the problems which are facing appointments and would give their directions as to how appointments in the civil services should be made. 100 की स्पीड है, 1000 वर्ड है, 96 नंबर है, सोर्स केसी है. एक लिखेंगे, 80 पे लिखेंगे आप. मॉर्निंग जी. रेडी? इसके अलावा आप जो है सॉफ्टवेयर में आप लॉगिन करके टाइपिंग कर सकते हो, ऑडियो ले सकते हो. उसकी ऑडियो अच्छी पड़ी हुई है. इस बार जो मैंने ऑडियो डाली है उसके अंदर वो क्लियर वॉइस पे है, बहुत कंफर्टेबल वॉइस. उसकी वॉइस को चेंज कर सकते हो, मतलब स्पीड चेंज कर सकते हो आप उसके अंदर. आप जितनी चाहो उतनी. 80 से कम की कोई स्पीड मत लेना, उसमें ऑप्शन जरूर दे दिया है, लेकिन 80 से कम पे मत लिखना. कोई भी डिक्टेशन लिखना हाई पे पहले, फिर लो पे लिखना. लिखो. असाइनमेंट के रूप में तुम्हें पार्ट 2A करके करना है, वो तुम्हारी चॉइस है. तुम यूट्यूब से लिख लो या उससे लिख लो, दोनों में ऑप्शन है आपके पास. 2A, पार्ट 2A कॉमन वर्ड का. रेडी? स्टार्ट. The credit movement in this country started in 1904 and it had its own difficulties since the last several decades. The main problem regarding cooperative credit has been that it has been untimely and inadequate. In 1904, the Cooperative Societies Act was passed, which was later amended in 1914. Then there were certain committees appointed and they reported about the weaknesses of the credit movement in the country. In 1919, this subject of cooperation was transferred to the states, after which several states passed cooperative acts of their own. Therefore, after in 1929, the Royal Commission made certain inquiries about cooperation and the credit movement and made certain recommendations. And till 1950 or 1951,
there was very little improvement in the field of cooperation. In 2001, the Reserve Bank of India appointed the Rural Credit Survey Committee, which brought out its report in 2004. That committee came to the conclusion that only 3% of the credit required by the agriculturists in the country was being met by the cooperatives, and it made certain suggestions. It suggested that there should be an integrated credit structure in the country and said that there should be share participation by the government in the cooperative societies. It suggested that the government should take shares in the cooperative societies so that the cooperative movement can get strength through government participation. The second recommendation made by the Rural Credit Survey Committee was that there should be linking of credit with marketing, processing, consumption, storage, and all other fields of activity, so that credit will develop marketing, consumption, processing, etc. Yet, another recommendation was that there should be a training program for the non-officials. The fourth recommendation and the most salient one was that there should be a three-tier structure of credit. There should be cooperative societies at the lower level. Then there should be district banks and then the apex banks, and that all the three should be interlinked. These recommendations were accepted by the Government of India. This report has also recommended that in order to implement these suggestions, there should be a National Cooperative Development and Warehousing Board. The Government of India had accepted these suggestions in 2006. According to that act, there came into being a warehousing board which took care of the warehouses in the country, and also the National Development Board which took care of the development of the cooperatives. It was first thought that the two boards should be worked out under the different acts, but as both the subjects were administratively under one ministry at the time, namely the Ministry of Food and Agriculture, it was thought proper at that stage that the same act should administer the National Development Board and the Warehousing Corporation. Thereafter, a separate department of cooperation was created and attached to the Ministry of Community Development, now called the Ministry of Community Development, Panchayati Raj and Cooperation. And it was decided by the government in 2010 that there should be two separate acts, one for Cooperative Development Board and the other for warehousing. In one of the papers submitted by the Ministry of Food and Agriculture, on the basis of which the President order to create the Department of Cooperation was passed, it was suggested that
these two bodies should be administered separately, and that is why we have now come before Parliament with this National Cooperative Development Corporation Bill. The other bill relating to the warehousing corporation will come up through the Ministry of Food and Agriculture after the bill is passed. Therefore, sir, the present bill is only an amending bill, and opportunity has been taken to have some minor amendments made in the bill. Firstly, the original act covered only agricultural produce, and agricultural produce had been defined in that act. And now, besides agricultural produce, any notified commodity is also being included. If government wants to include any commodity for which Parliament is competent to legislate, it can notify that commodity and apply the provisions of this measure to that commodity. In that case, we will not have to come to Parliament again and again. Any commodity which is in the concurrent list and for which Parliament can legislate can be notified by government for the application of these provisions. The second amendment is about the functional committees. In the present act, there is no provision for functional committees. Now, this corporation has to deal with credit, processing, marketing, consumers, and all these types of items in order to boost up the cooperative movement. We found that there was a lacuna, and therefore we have suggested a provision to have functional committees. It is only an enabling provision, and after this bill becomes act, we will have functional committees regarding credit, processing, consumers, etc. Then there was no power of delegation. ये 80 की स्पीड है आपकी, 49 नंबर है, केसी सोर्स है, और लास्ट लिखेंगे आप 3P के पार्लियामेंट से बोल देता हूँ कंटेंट, जो अनसीन कंटेंट है. इसमें एक वर्ड आया था अगेन एंड अगेन, तो आपको पैटर्न पता है इसके लिए क्या करते हैं, डबल डैश. ठीक है, इससे पहले वाली डिक्टेशन में एक वर्ड रिपीट होता है एंड के साथ. जब भी कहीं भी कोई वर्ड रिपीट हो एंड के साथ, ओवर एंड ओवर, हायर एंड हायर, तो आपने बस सिंपली क्या करना है, उसमें डबल डैश पुट कर देना है, वो सेम वर्ड एंड के साथ रिपीट किया जाएगा. अब आप एक अनसीन लिख लो एक बारी पार्लियामेंट से, उसके बाद फिर चॉइस होगी आपकी. इसको आप सॉफ्टवेयर पर टाइप कर सकते हो, ये सॉफ्टवेयर पर अवेलेबल है. मैं अभी तो देखो फिलहाल क्या कर रखा है, 80 एक तो डाल रखा है इसमें @80 और एक डाल रखा है @120. आप इसको मॉडरेट कर सकते, चेंज कर सकते हो इसको 100 पर, अगर लिख के सुन के लिखनी है तो, वरना आप डिक्टेशन लिख लो सीधा टाइप कर सकते हो. उसमें मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, मैं इसको करूँगा विदाउट कोमा और विद कोमा, ताकि बच्चों की ना वो जो कॉन्फिडेंस लेवल वो डाउन ना मारे. तो इसकी दोनों फाइलों को मैं अलग अलग करवा देता हूँ. मैं इसमें से जो कोमा के साथ मैंने फाइल डाली हुई है, स्मॉल कैपिटल मैक्सिमम ठीक है, लेकिन अगर कहीं ऑब्जेक्शन आता है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक इसमें बुक के अंदर कहीं पे वो कैपिटल दे दिया, फिर बाद में उसने उसको स्मॉल कर दिया है, या शुरुआत में स्मॉल कर दिया बाद में कैपिटल कर दिया. तो फर्स्ट चैप्टर में दे रखी है ऐसे जो है, कुछ आता है केसी की 1 में ही आता है, ऐसे एक दो वर्ड है, तो एज इट इज़ टाइप किया गया. तो अगर कोई इस तरह की मिस्टेक निकलती है तो आप मुझे नोटिफाई कर सकते हो कि इसमें यहाँ पे कैपिटल है और यहाँ पे फिर दोबारा से उसको स्मॉल कर दिया गया, तो उनको एक ही पैटर्न पर रखा जाएगा.
आपको पता है एक्ट का ए कैपिटल होता है, बिल का बी कैपिटल होता है, हाउस का एच कैपिटल होता है, जो चीज़ें जनरली पता है उनको यूज़ किया करो। कोमा, हालांकि मेरी सजेशन तो यही है हमेशा से कि आप कोमा के साथ टाइप करो, लेकिन फिर भी अपने कॉन्फिडेंस के लिए आपको चेक करना है कि नहीं हम तो बिल्कुल एसएससी को ही लेके ही चल रहे हैं और हम विदाउट कोमा ही सब कुछ टाइप करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, स्मॉल कैपिटल तो लगाएंगे लेकिन कोमा नहीं लगाएंगे। तो मैं इस फाइल को आज मॉडिफाई करा देता हूँ। तो फाइल 66 तक तो आज ही मॉडिफाई हो जाएगी, एक केसी से लेके 66 केसी तक का। इस सैटरडे को कोशिश करता हूँ कि 300 केसी आपकी मिल जाए आपको, आप 300 केसी तक का आपको फ्री हैंड मिल जाएगा, उसके अंदर 1 से लेकर 300 तक का अलग दो, एक विदाउट कोमा, एक कोमा। लेकिन स्पीड चाहे उसमें 120 लिखी हो या स्पीड उसमें 80 लिखी हो, ये मैटर नहीं करेगा आपके लिए। आप इसको नीचे से चेंज कर सकते हो, स्पीड को नीचे फिल्टर है उससे चेंज करके वो कर सकते हो। अगर आपके किसी के उसमें व्यू आंसर का ऑप्शन नहीं आ रहा, आप कह रहे हो सबमिट करने के बाद में आंसर नहीं दिख रहे, तो आप मुझे बताएंगे, मुझे इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें एक साथ बनाई है। तो कुछ में दिख रहा है, कुछ में नहीं दिख रहा। जिसमें नहीं दिख रहा होगा आप मुझे बता देंगे कि मेरे उसमें इस कंटेंट के अंदर मैं व्यू आंसर नहीं कर पा रहा हूँ। बाद में एक बच्चा 3 अटेम्प्ट दे सकता है एक डिक्टेशन के, उसके बाद वो उसमें रन नहीं होगा। मतलब आप एक डिक्टेशन को कम से कम 3 बार लिख सकते हो उससे, ठीक है। अगर ये 2 अलग अलग स्पीड पे है तो 3 बार इसको लिख सकते हो, 3 बार इसको लिख सकते हो। सारे कोमाज हटा दूंगा, फिर देखो या तो कोमा लगाए जा सकते हैं सारे, या सारे कोमा हटाए जा सकते हैं। बीसी चीज़ नहीं की जा सकती आपके माइंड के हिसाब से कि मैं इसमें कोमा लगा रहा हूँ, क्योंकि आप लगाओगे कोई दूसरा बच्चा लगाएगा, वो ऑब्जेक्शन क्रिएट करेगा कि सर मैं तो बिना कोमा। तो फिर या तो 2 फाइल होगी, एक कंप्लीट जो कोमा उसके हिसाब से दे रखे हैं वो होगी, और एक विदाउट कोमा होगी। फिर इसेंशियल कोमाज भी मैं उसमें हटा के चलूंगा। तो चॉइस आपकी रहेगी। सजेशन मेरा हमेशा कोमा के साथ फाइल को टाइप करने का रहेगा। अगर आपकी एक्यूरेसी 92% आ जाती है कोमा के साथ में, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि अभी कोमा नहीं कैच कर पा रहे हो। स्मॉल कैपिटल तो कैच करने स्टार्ट कर दिए होंगे, लेकिन कोमा को कैच करने में थोड़ा समय लगता है। आपके जितना ज़्यादा ध्यान दोगे उतना ज़्यादा ऑब्जर्व करते जाओगे। एक वो लिख लो, अनसीन लिख लो एक बारी, 2 मिनट, 1 मिनट दो, मैं लेकर आता हूँ। और जो मैंने कल आपको ग्राम लोग के सेट बोले थे, जिसके पास नहीं है वो सेट लेके जाऊंगा, उनको अभ्यास करूंगा। ग्राम लोग में एक भी मिस्टेक नहीं चाहिए, नॉट अ सिंगल मिस्टेक्स। कोई ग्राम लोग आप अपने तरीके से बनाते हो, अपने तरीके से बनाओ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट उसको सही पढ़ो। सेकंड, आपको जो है, जो आज मैंने बोले हैं, कॉन्ट्रैक्शन बोले हैं, इसेंशियल वोवेल्स बोले हैं, अगर किसी बच्चे के छूटे हो तो आप चैप्टर नंबर 29 और चैप्टर नंबर 32 में पिटमैन की बुक में दिए हुए हैं, वो लिस्ट पूरी तैयार करो, और नहीं तो व्हाट्सअप कर दो, मैं आपको कर देता हूँ, फोटो भेज देता हूँ आपको। स्मॉल कैपिटल का बेसिक पेज सबके पास होगा मोस्टली, अगर नहीं है तो आप इसको फिर से लेके जा सकते हो। रेडी? स्टार्टेड। Ladies and gentlemen, promising initiatives have been taken both at the national and international levels aimed at addressing the challenge of climate change. The adoption of the Paris Agreement and the Sustainable Development Goals in 2015 are but 2 crucial steps in this effort. They speak of the global acceptance of the view that all the people and countries of the world need to work together for our common future. India ratified the landmark Paris Agreement that was reached at the 21st Conference of Parties 4 days ago on the occasion of Mahatma Gandhi's birth anniversary. I am glad that
our ratification has occurred prior to the next conference of parties, and I hope that it will encourage other countries to follow suit. If the legally required ratification by countries who together account for 55% of the global emissions is achieved, it will enable the coming into force of the Paris Agreement before the next conference. This will be a major boost to our fight against climate change. I take this opportunity to compliment France for its effective leadership at the Paris conference. The world is facing challenges in all the three dimensions of sustainable development: economic, social, and environmental. On the one hand, over 1.25 billion people are still living in poverty. On the other, patterns of unsustainable production and consumption are endangering our planet's ecosystems. This threat presents us with an opportunity to work together. Global action built on partnerships is required to achieve sustainable economic and social progress, inclusive growth and protection of the Earth's ecosystems. Both the nationally determined contributions and the sustainable development goals impel us to look beyond national boundaries and act in solidarity rather than in silos. Collective action indeed is necessary to address the shared concerns of our world. I am happy that through the World Sustainable Development Summit, TERI is taking a lead in providing a platform for sharing of experience and for collaborating on strategies for result-oriented action. This collaboration between governments, private sector, academia, and civil society will be a vital source of knowledge, innovation, expertise, and solutions in tackling the twin and interlinked challenges of development and environment. The theme of this summit, Beyond 2015, People, Planet, and Progress, will motivate us to transform the way we think about progress. The barometer of prosperity is not merely economic growth, but the well-being and availability of opportunities for all. Prosperity can be secured only when our planet remains healthy. We must work towards effective governance of our planet's natural resources to ensure clean air and water. We must also work towards adequate food and nutrition for all people. Reducing socio-economic inequalities is a universal agenda that requires urgent action by all nations. I hope this World Sustainable Development Summit will deliberate on policy discourse and conceptualize new solutions to find innovative pathways of development. I am confident this conclave
will witness the formation of multi-stakeholder partnerships that will benefit all while safeguarding Mother Earth's ecosystems. I conclude by wishing you all success in your deliberations. Honorable members of Parliament and state legislatures, distinguished representatives from the media and legal communities, ladies and gentlemen, I am glad to be here today to inaugurate the CPA Parliament and Media Law Conference in this port city of Visakhapatnam. The Commonwealth Parliamentary Association has been actively engaged in the issue of media freedom and its relation to Parliament. 15 years back, the CPA and the Parliament of India, in association with several Commonwealth media organizations, held a conference on Parliament and the media, building an effective relationship, which was followed up with other similar conferences focused on various aspects of an informed democracy. It goes without saying that a free, responsible, and diverse media is as vital to parliamentary democracy as democracy is for freedom of speech and expression. An independent media can play crucial role in building and molding public opinion, which in turn influences decision-making process. The freedom of press, which it was once called and now includes freedom of every kind of mass media, is not simply freedom of journalists, editors, or proprietors alone to report and comment, but it includes public's right to know and to participate in free flow of information. While Commonwealth countries generally recognize the right of the media to a fundamental level of freedom, in practice, this right is constrained as well as protected by constitutional provisions, statutes, legal precedents, and licensing conditions. In India, media freedom is constitutionally secured through fundamental right to freedom of speech and expression in Article 19(1)(a) of the Constitution. However, right to freedom of speech and expression comes with restrictions such as sovereignty and integrity of country, security of state, public order, decency or morality, etc. In recent years, there has been progress on freedom of expression, with several Commonwealth countries enacting substantial legislation on it. 800 वर्ड है और ये पार्लियामेंट का अनसीन का 22 नंबर है, 3 पीस है। 80 की स्पीड है, कंटेंट टफ होगा। अगर आपने ये अच्छा नहीं लिखा, आप पहले दो में से कोई भी टाइप करेंगे, ठीक है। अदरवाइज मैं आपकी जो आप लिख के लेके आए हो, मैं आपकी स्पीकर पर डिक्टेशन लगवा देता हूँ, वो लिख सकते हो। अनसीन अच्छी लिखो, अनसीन टाइप करो, सीन अच्छी लिखो, सीन टाइप करो, ठीक है। पहले आपको सबसे पहले 10 या 12 जो मैंने कल बोला था, जो सॉफ्टवेयर पर आपको चेक करानी है, बाकी सब आपको अनसीन लिख सकते हो उस पर, ठीक है।